Good afternoon, sir. Good afternoon. क्या हाल चाल? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. सब लोग ठीक? लंच हो गया? बढ़िया सर, आप बताओ. हो गया, लंच हो गया. लंच हो गया था आपके क्लास के बाद. सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. 26-27 लोग हो चुके, 4-5 लोग बाकी हैं. पीपल आर ज्वाइनिंग. 2 मिनट में शुरू करेंगे क्लास. 2 मिनट में शुरू करेंगे. All right. So where we were in the last class, आगे सभी लोग. We were doing trim case, right? What happens when there is a trim? Did we do it? Yes sir. फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपका? Yes sir. So what is the formula that you have come across? When there is a trim by an angle of beta, what happened? Sir, V equals to C bracket FR F minus FRA and divided by 4FT. 4FT Cos beta. cos alpha cos beta. So बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे बात करेंगे थोड़ा सा. All right, so he said that the trim
when the ship is trimmed little bit like this by an angle of beta, the formula becomes V is equal to FRF minus FRA into C divided by 4FT cos alpha cos beta. In this, we see that this is all the old one. सिर्फ 1 by cos beta का फर्क रह गया. There's only this difference which is remaining or which has been coming in this. That means this is the actual speed. Is equal to this is the indicated speed. जो पहले speed आता था divided by cos beta. So this is what is happening. Actual speed is indicated speed divided by cos beta. Remember that because of beta, the cos alpha plus beta and cos alpha minus beta, they changed. Because of this relative motion change, the FRF and FRA has changed. So this and this changed. That means because of this input is changing, so this is going to change or not? Yes, sir. That means this indicated speed is changing. Supposing the ship was doing 15 knots. The angle of beta was 0 degrees. That means no trim, upright ship. Then indicated speed will be 15. Is that correct or not? Cos 0 is equal to 1. So 15 by 1 is equal to this and this. Correct? Yes, sir. Now suppose that there is some beta changing. कुछ यहाँ पे आया. मान लीजिए 1 डिग्री. जो 1 डिग्री का चेंज आया बीटा एंगल, इसके चलते ये चेंज हुआ, इसके चलते ये चेंज होगा, इसके चलते यही चेंज होगा ना? Yes, sir. कैसा चेंज होगा? That means this indicated speed should be equal to this into cos 1 degree. So can you tell me what will be the indicated speed if there is a trim angle of 1 degree? Then how much is going to be the indicated speed? Sir, 14.99. Okay, so that means the actual speed was 15, indicated speed was 14.99 divided by cos 1 degree is this. So the indicated speed changes such that the actual speed is more than the indicated speed. आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ट्रिम का तो केस हम लोग ठीक कर लेते हैं, फिर ये हम डिफरेंस क्यों देख रहे हैं? So can you see the difference between the two? जो डिस्प्ले पे है और जो जहाज एक्चुअल चल रही है, how much is the difference? But sir, it is almost negligible. Negligible. That means it is all right. Should I be worried about this? No, sir. No. That means genus configuration में जब trim होता है, तो there is change which is taking place is nothing, something that I should be worried about. Is that correct? I can neglect that. Is Yes. that correct? That means genus configuration is okay for trim case. Is that okay? Yes. So hence proved that genus configuration takes care of trim. There is change in the speed, but this speed change is very, very negligible
as compared to the actual speed, so it can be neglected without any problem. Okay, Is sir. that right? Agreed? Yes, sir. Very good. So in the case when the ship was trimmed by stern, when it was like this, we got this beta, where forward में अल्फा माइनस बीटा हो गया था, aft में अल्फा प्लस बीटा हुआ था. When the ship is trimmed by head, तो आगे में ये प्लस हो जाएगा, पीछे माइनस हो जाएगा. Yes. When it is happening, जो हमारा expression था और the way we had started the derivation of the formula FRF minus FRFT is equal to 2BFT cos alpha माइनस बीटा की जगह अब प्लस बीटा हो जाएगा. फॉरवर्ड में प्लस बीटा हो गया. Yes, sir. In case of aft transducer, this will be minus 2VFT cos alpha minus बीटा. यहाँ पे माइनस हो गया. Yes, sir. क्लियर? जब हम इसको कॉमन लेकर के करेंगे तो इनकी प्लेसेस बदल गई है, बट साइंस तो वैसा ही रह गए. Yes, sir. तो साइन अल्फा साइन बीटा फिर से कैंसिल हो जाएगा. And after this, we will get the formula, the same formula in the same fashion. FRF minus FRA into C divided by 4FT cos alpha cos beta. Same thing will remain either in this case or in this case. Down by head or down by stern, the formula remains same and the speed goes less than actual speed. The Doppler log never gives speed more than the actual. Either it will give actual, or when there is change in the angle, it will be less than the actual. Understood? सही है? Agreed? Yes, sir. Any doubt? आवाज नहीं आई बहुत देर तक. कोई डाउट है? सर एक डाउट पूछना था. बोलो बोलो, गो सर अहेड. जो जब बीटा की वैल्यू लेंगे कैलकुलेशन में तो सर जैसे ट्रिम बाय हेड है तो उसके लिए पॉजिटिव लेंगे या कुछ ऐसा साइन का है या सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे? नहीं, साइन का क्या? साइन तो भाई देखो दो केस है ना. हमने एक केस लिया, फर्स्ट केस में इट वाज दिस. जब डाउन बाय स्टर्न गया तो ये एंगल तो बीटा क्रिएट हुई ना. यस सर. और इसके चलते जो एंगल था वो सामने में अल्फा माइनस बीटा हो गया. यस. ओके सर, समझ गया. पीछे में अल्फा प्लस बीटा हो गया. ठीक है? यस सर. When the shape is trimmed by head, the transmission was taking place like this. When there is down by head, तो ट्रांसमिशन ऐसे और ऐसे हो गई या नहीं? यस सर. तो there it becomes अल्फा प्लस बीटा, here अल्फा माइनस बीटा. सिर्फ एंगल ही तो चेंज हुआ, इसमें साइन का तो कोई फर्क नहीं पड़ा. यस. ओके. तो हमने cos उल्टा लिखिए ना सर. बीटा में ये हमने प्लस साइन जो था वो चेंज कर दिया, बस एंगल तो चेंज हुई. इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का तो कुछ नहीं है. ट्रिम बाय हेड में सर जो पहला वाला है वो अल्फा प्लस बीटा होएगा ना, उल्टा लिख यस, दिया. सामने वाला
ये वाला अल्फा माइनस बीटा रहेगा। नहीं, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है व्हेन डाउन बाय हेड, डाउन बाय स्टर्न। नहीं समझ में आया? कैसे, फिर से बताऊं? सर ये बीटा वाला जो एंगल है ये तो नीचे आ गया ना, तो उतना कम हो जाएगा एंगल। ओके, फिर से बताते हैं। Is this okay? Ship is upright. ठीक है अभी? यस सर। सही है। Is this the horizontal जिससे हम मेजर कर रहे हैं अल्फा? यस सर। अब जब डाउन बाय स्टर्न जा रही है तो ट्रांसमिशन इधर को होगा या नहीं? The shape was like this. It was transmitting here earlier. When there is हाँ down सर। by head, तो ये इधर को होएगा या नहीं? हाँ सर। तो पहले जो एंगल थी और अब जो एंगल है, पहले जो एंगल थी और अब जो एंगल है, इसमें ये माइनस हुआ या प्लस हुआ? इससे कौन सा ज्यादा है? माइनस हुआ सर। तो अल्फा माइनस बीटा हुआ या नहीं? हाँ सर। यहां से यहां तक तो अल्फा था, प्लस ये साथ में बीटा हो गया या नहीं? सो हाफ में अल्फा प्लस बीटा हुई या नहीं? फ्रॉम हेयर टू हेयर ये माइनस हुआ या नहीं? व्हाट डू यू से? क्लियर या नहीं अभी भी? हाँ सर। क्लियर हो गया या नहीं? फिर से बताओ, नहीं तो फिर से मैं रिपीट करूंगा। यस, क्लियर है? सर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। फिर से हम देख लेते हैं इसको दूसरे केस में। When down by head, so transmission is now going to take place like this. All right, down by head. So is this angle now more than this or not? Which is equal to from here to here. So इसके साथ तो अल्फा था, अपने कील के साथ तो अल्फा था, लेकिन जब डाउन बाई हेड गई तो इतना एंगल बीटा ऐड हो गया या नहीं? यस सर। यहाँ पे ये तो अल्फा था, अपने कील के साथ तो अल्फा पे ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन अब इतना माइनस हो गया या नहीं? हाँ सर। तो अब क्लियर हुआ कि रेड वाले केस में डाउन बाय स्टर्न में यहाँ अल्फा माइनस बीटा थी, अल्फा प्लस बीटा थी। यहाँ जब डाउन बाय हेड गया तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो गया और यहाँ अल्फा माइनस बीटा हो गया। हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। इज इट क्लियर? अभी भी डाउट है? सर एक डाउट है लेकिन बहुत ही सिली सा लग रहा है। जो ये बोलो, एंगल बनाता है ट्रांसपोंडर, ये ट्रांसपोंडर बेड वाला जो ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर सॉरी ट्रांसड्यूसर जो एंगल बनाता है, ये बेड पे जो एंगल बनाता है अपन उसको कंसीडर करते हैं ना? बेसिकली वही है, बेड पे जो बना रहा है वही एंगल कंसीडर हो रहा है, बट दैट कैन आल्सो बी नहीं सर। विद द हॉरिजॉन्टल ओनली। इससे भी वही चीज है। जब हाँ सर वही, लेकिन जब अगर लिस्ट और ट्रिम रहेगा तो अपन बेड का जो एंगल लेंगे
तभी जाके अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा आएगा। अगर हाँ बेसिकली, हाँ ये सही कह रहे हो आप। अगर मान लो सी बेड ऐसे होगा तो, अगर सी बेड ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, नहीं तो यहाँ ट्रांसमिट करेगा, फिर भी एंगल तो चेंज होता रहेगा। हाँ सर वही। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रही है, जहाज ऐसे चल रहा है। सो बेसिकली व्हेन द शिप इज ट्रिम्ड, बेसिकली इसी का फंक्शन है ये अल्फा माइनस बीटा। बेड से लो या यहां से लो, या इससे लीजिए या इससे लीजिए, ये दोनों एंगल तो एक ही बराबर होगा ना। हाँ सर। अगर मान लीजिए हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, यहां से ट्रांसमिशन हुई ऐसे, तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है। हाँ सर। अगर हमने ट्रांसमिशन किया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन किया तो ये एंगल होगी, वही ये एंगल होगी, इसी लाइन से होगी ना। हाँ सर। तो ये माइनस हो गया या नहीं पहले से, यस सर। और यहाँ पे प्लस हो गया या नहीं। जब ये ट्रांसमिशन इधर को आएगा तो ये वाली तो अल्फा थी, ये इतना प्लस हो गया या नहीं। हाँ सर आगे। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। All right, so we have seen the trim case, how it is helping. Next one is that effects of various motion of the shape on displayed speed. Please hold on a second, मैं थोड़ा इसको एक डाल दूं, सूख रहा है। So we are talking about effects of various motion of the shape on the displayed speed. Now, what is happening when the ship is moving? She is going up and down, heaving. When she is moving, she is doing roll. When she is moving, she is also pitching the stern and head, going up and down, pitching side by side, port starboard, rolling vertically up and down, heaving, and also constant changing heading. Yaw. So she is subjected to 4 kind of motion in this condition: heaving, rolling, pitching, and yaw. How is this going to affect the indicated speed? Trim के केस में देखा हमने कि there is some change. It is negligible, but yes, there is some change. So now we have a Doppler log on board ship, which is, remember, dual axis now. तो दोनों पे ही असर पड़ेगा, किस पे क्या असर पड़ेगा? The forward and aft speed, how will this be affected because of these 4 motions? The port starboard speed or athwart speed, how will this be affected by these 4 motions? So we'll do that in the form of a table. So motions of the ship, and with this, the forward aft speed, how it is affected, and port starboard speed, how it is affected. So motions, what do we have? We have first heaving, we have pitching, we have rolling, and we have yaw.
So now you tell me how the forward aft speed is affected by heaving. आप बताएं मुझको. How the Doppler log speed, indicated speed, is going to be affected by heaving. Aditya, Not affected. come again. In heaving, it won't affect. Yes, very good. क्योंकि जेनस कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऑलरेडी देखा कि वर्टिकल मोशन को रूल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया हमने. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हीविंग ऑन द फॉरवर्ड आफ्ट स्पीड. और अगर फॉरवर्ड आफ्ट पे नहीं है तो पोर्ट स्टार्बोर्ड में भी नहीं होगा. सो दिस इज दिस केस. नेक्स्ट वन इज पिचिंग. व्हाट इज पिचिंग? The shape goes down by head, then becomes upright, goes by stern, then upright, then like this. She is doing, it is like constant changing head trim or not? Yes, sir. So जब trim हुआ था तो क्या result आया था? Formula change हुआ था? So negligible change. Actual speed is equal to indicated speed by cos beta. Yes. तो जब सीधी 0 डिग्री होगी तो cos 0 is equal to 1, कुछ नहीं होगा. जब डाउन बाय हेड जाएगा तो कम होएगी, फिर डाउन बाय स्टर्न जाएगा तो कम होएगा स्पीड, इंडिकेटेड स्पीड. डाउन बाय हेड जाएगा तो भी कम होगा. करेक्ट? Yes, sir. So the forward aft speed will be affected like actual speed is equal to indicated speed by cos pitch angle. So the forward aft speed is getting affected like this. As there is pitching, depending on the angle of the pitch, the indicated speed will change. What will happen? It will increase or decrease? Decrease. Very good. It will decrease. Either it will come to actual speed, और जैसे ही pitch होता है down by head, down by stern, तो ये कम होएगी. So remember that we have dual axis. The ship is forward going like this, transmission happening in this direction, and the ship is pitching like this. So angle is changing, alpha beta is happening. But what happens to this? Is this angle changing? Anything like this? No, sir. Any change in the angle that you're observing here when the ship is going down by head, down by stern? No, sir. Yes? No, sir. No. sir. That means it will not affect the port starboard speed. When it is rolling, when the ship is rolling, ship is like this, transducer like this. When she is rolling, is the angle changing? Yes, sir. Yes, sir. Which one, forward, aft, or starboard? Port starboard. Starboard. What is What starboard? about this one? Is it changing? No. No, No, sir. sir. No. No, sir. That means similarly, this will not affect the forward aft speed, but here it will be affected. How? Actual speed is equal to indicated speed by cos of roll angle. Next one is yaw. When the heading is changing constantly. Bad weather, you have seen that the ship keeps doing like this. That means heading is changing all the time. Provided there is only yaw और कोई motion नहीं, तो इससे किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर. No, sir. नहीं. Very good. No, So sir. now you are becoming smart. So no effect.
no effect. So this is what is the condition of displayed speed because of various motions. Any questions here? सर लेकिन यॉर्निंग तो बोलिए, go ahead. सर यॉर्निंग केवल हैवी वेदर में होती है, उसमें वो रोलिंग के साथ क्या करता है? वन सेकंड पहला करेक्शन, यॉर्निंग नहीं है, ये एन नहीं है उसमें, इट इज जस्ट यॉ, YAW. ओके सर, ठीक है, ओके ओके, सर। नाउ गो अहेड. सर जो या है उस पे जब ये तो हैवी वेदर पे ही होता है, और हैवी वेदर पे रोलिंग के साथ ही होगा ना ये, तो इस पे एडजस्टमेंट तो हल लगेगा ना सर? एकदम सही बात. हम लोगों ने इंडिविजुअल बात की है कि हेविंग होगा तो क्या, पिचिंग होगा तो क्या, रोलिंग होगा तो क्या, यॉ होगा तो क्या. नाउ व्हेन द शिप इज गोइंग इन हेवी वेदर, सब कुछ चारों चीजें एक साथ होती, रोलिंग भी होता है, पिचिंग भी होता है, यॉ भी होता है, हिविंग भी होता है, सब होता है एक साथ. तो सबका No, इफेक्ट होएगा सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने बात किया. अगर एक कंडीशन में, मान लो एक इंस्टेंटेनियस कंडीशन लेते हैं, जहाज ऐसे है, रोल है, यस सर, यस सर, पिच है, डाउन बाय हेड है, नो सर, नो सर, नो सर, जहाज was like this, right now she has turned like this and like this, तो पिच हो गई या नहीं, डाउन बाय हेड चला गया या नहीं, यस सर, यस सर, रोलिंग भी है कि नहीं साइड में, यस सर, यस सर, हेडिंग भी चेंज हो चुकी है या नहीं, यस सर, और जहाज नीचे भी डिप हुई है थोड़ी सी, ये भी जा रही थी, तो चारों के चारों चीज हो गए ना एक साथ. यस सर, यस सर, तो जो रोल हुई थी उसके चलते पोर्ट स्टार्बोर्ड स्पीड थोड़ा सा कम हो गया होगा, यस सर, जो ट्रिम हुई पड़ी है या पिच हुई पड़ी है उसके चलते थोड़ा सा फॉरवर्ड आफ्ट स्पीड चेंज हो गया होगा, यस सर, जो हेडिंग चेंज हुई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, नील नील, यस सर, यस, और जो नीचे जा रही थी उसके चलते भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, नील नील, हीविंग. यस सर, यस सर, दैट इज व्हाट इट इज. दोनों स्पीड चेंज हो गई थोड़ी सी, इतनी सी. अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। सो सारे के सारे मोशन एक साथ होते हैं, दो को हमने आउट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो रोलिंग से फॉरवर्ड ऑफ स्पीड को फर्क नहीं पड़ेगा, साइडवेज स्पीड में फर्क पड़ेगा. जब रोलिंग होगी तो पोर्ट स्टार्बोर्ड स्पीड फ्लक्चुएट करता रहेगा एज बिटवीन एक्चुअल एंड लेस देन एक्चुअल. जो पिचिंग होगी उससे फॉरवर्ड ऑफ स्पीड अफेक्टेड होएगा, एक्चुअल और लेस देन एक्चुअल. दैट्स ऑल. विजुअली भी 0.01 0.02 नॉट्स, जो कि नेग्लिजिबल है, वी कैन ओमिट इट. सर ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअल स्पीड इक्वल्स टू इंडिकेटेड स्पीड अपॉन cos बीटा एंड cos एंगल ऑफ रोल. सो दिस एक्चुअल स्पीड सर, ये भी तो डॉपलर लॉग से ही निकालेंगे, वो कैसे आएगी? नहीं, मान लो मेरे पास एक जहाज है, जहाज चल रही है 15 नॉट से, मेरे पास डॉपलर लॉग नहीं, जहाज चल रही है, मुझको मालूम है कि जहाज 15 नॉट से चल रही है. अब 15 नॉट से चलते हुए मैंने डॉपलर लॉग ऑन कर दिया, जो बनाया हमने उसको ऑन कर दिया. अब डॉपलर लॉग स्पीड दिखा रहा होगा या नहीं? यस सर, कितना स्पीड दिखा रहा होगा? अगर सब कुछ सही है, 100% सही है, तो कितना स्पीड दिखा रहा होगा? जहाज 15 नॉट से चल रही. सर कम दिखा रहा होगा सर, जोर से बोलो. इससे कम दिखा रहा होगा सर. क्यों?
Everything good, no trim, nothing. No sir, same. सेम, मतलब 15 नॉट से जहाज चल रही थी, 15 नॉट दिखा रहा होगा। Yes sir. ट्रांसमिशन आगे अल्फा पीछे अल्फा। Yes sir. अब चलते चलते 15 नॉट दिखा रहा है, थोड़ा सा ट्रिम हुआ जहाज, 15 नॉट से चल रही थी, थोड़ा सा पीछे झुका, एंगल चेंज हुए या नहीं? Yes sir. एंगल जब चेंज हुए तो रिलेटिव मोशन v cos अल्फा की जगह v cos अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा हुआ या नहीं? Yes sir. उसके चलते फ्रीक्वेंसी शिफ्ट चेंज हुई होगी, FRF FRA चेंज हुआ होगा। Yes sir. Okay sir. जहाज कितने स्पीड से चल रही थी? 15 knots sir. 15। लेकिन डिस्प्लेड स्पीड में इनपुट बदल गए, FRF की वैल्यू FRA की वैल्यू बदल गई, तो चेंज कौन सा होगा? ये बदल जाएगा या ये बदल जाएगा? डिस्प्लेड स्पीड So display speed कितना होगा? less than actual speed. That's what actual speed is equal to indicated speed by cos beta. यहाँ पे 14.99 हो जाएगा, divided by cos beta will be 15. Yes sir. ठीक है क्या नहीं? Okay sir. Understood? Yes sir. Yes sir. Okay. Errors of Doppler law. What is happening in the Doppler law? Why we are, what do we mean by errors? We should be aware of any equipment, how it gives me an information, and how this information can go wrong. Knowing our power is okay, but knowing our weakness is also equally okay. So in what are the conditions where the Doppler log may give me wrong information? What are the sources of error? So if we remember the speed formula by the Doppler log, what was that? V is equal to how much? CFR minus FT. Is that correct? Yes. अगर ट्रिम होगा तो cos बीटा भी लग जाएगा. Now these are the inputs FRA, FRF, FRA, C, alpha, FT. ये सारे इनपुट से मुझको V मिलती है. Is that correct or not? Yes sir. If any one of the input is going wrong, तो output wrong होगा कि नहीं? Yes sir. So identify what are the possible causes that can lead to error in this. What are you identifying which can go wrong? Sir, received frequency. Received frequency. Very good. That means when the ship is transmitting, we are receiving this frequency and we are calculating FRF and we are calculating FRA. अगर हमारे रीडिंग में गड़बड़ हुई तो ये इनपुट गड़बड़ होगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा. Very good. So you can take this one as number one. Source of error. Error in measurement of received frequency. इलेक्ट्रॉनिकली जो हम रीड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को कि कितना आया, उसमें अगर गड़बड़ हो गई तो हमारा स्पीड इंडिकेटेड भी गड़बड़ होएगा. एनी अदर सोर्स? Sir, angle of transmission. Angle sir. अल्फा. हमने कहा कि हम 60 डिग्री पे ट्रांसमिट कर रहे हैं. जब हमने नट बोल्ट टाइट करी सब,
तो हमारा ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रहा है 63 डिग्रीज पे, एक्चुअल हम यहाँ कर रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं 60 डिग्री, तो ये सही रीड करेगा। हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 63 पे और कैलकुलेट कर रहे हैं 60 पे। विल इट गिव करेक्ट रीडिंग? No, sir. No. Very good. That means this is another source of error. What else? The See, transmitted frequency. Also very good. This can be said as oscillator frequency. This can go wrong. हमने कंप्यूटर में दिया हुआ है, जो प्रोसेसर है हमारा, इसका कंप्यूटर जो है डॉपलर लॉ का, उसमें वैल्यू हमने दे रखी है 100 किलोहर्ट्ज, लेकिन जब ट्रांसमिशन करते हैं तो सर्किट की हीटिंग और टेम्परेचर वगैरह के चलते थोड़ा सा प्रॉपर्टीज चेंज होता है, तो हो सकता है कि वो 100.1 ट्रांसमिट कर रहा हो। सो अगर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है, एफटी जो हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ ट्रांसमिट कुछ और कर रहा है, एफटी हमने बोल रखा है 100 के और यहाँ पे हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट इज 100.1 के, तो ये और ये फर्क हो गया है ना, इसका रिस्पॉन्स फर्क हो जाएगा। सो दिस इज सोर्स नंबर 3, एरर इन ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। एनी अदर सोर्स? The speed of wave as per density of water. Very good. So this is number 4. When the wave is traveling, if the temperature salinity changes, this also changes. We are taking 1500 meter per second, जो हमने यहाँ 1500 दे दिया इसको, लेकिन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। अगर डेंसिटी कम हुई, फ्रेश वाटर में जाएंगे तो दिस विल आल्सो गो लेस। तो यहाँ तो 1500 देके हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्पीड यहाँ पे कुछ और आ रही है। सो देयर कैन बी अदर सोर्स। सो अगर फॉर्मूला याद है तो 4 एरर सोर्सेज तो हमने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया। द सोर्सेज ऑफ एरर, नंबर 1, propagation error, that is due to salinity of the water, temperature of the water. The speed of the sound waves may change as the ship is going from one water to the different water. That will cause error in the displayed speed. Number 2, transducer orientation alpha. We already understood. What we are telling the computer, the value of alpha that is given to the computer is not matching with the actual angle at which the transducer is transmitting. So alpha, this one is C. Number 3, error in oscillator frequency, FT. We already discussed that. Number 4, error in measurement of received frequency, FR. So ये तो 4 हमारे ऐसे ही एरर हो गए। Number 5 is something called side lobe error. We will see about what is this side lobe error. What else? We have another one. Just one second. Okay, let us discuss with this side lobe error. We have one more source of error which we are going to discuss also.
So next one, what we are calling the side lobe error. See, when the transmission is happening, हमने दिखाया कि ऐसे और ऐसे ट्रांसमिट करता है. Angle alpha. But actually कोई भी साउंड वेव ऐसा पेंसिल बीम के जैसा ट्रांसमिट नहीं करता. It is not transmitted like this. When I am speaking, is my voice going directly only to the microphone, or it is going in all direction? In all directions. Spreading. Okay, All it is Right. all direction. But can I reduce this all direction if I concentrate my energy like this? Now, is my voice being received by the microphone more and more because transmission Yes. less this side? Yes, sir. Yes. That means the way radio waves, not radio waves, the sound waves which is transmitted as a beam, not as pencil beam, but as a beam. तो beam में transmit करने के लिए the actual transmission which is happening is like this. This is the beam width, what is called. The angle is beam width. Aft also it is transmitted in the same way. जबकि अब सेंटर का जो एंगल है वो उसको हम अल्फा बोलते हैं. When we make this as a beam, इसको मैं नैरो भी कर सकता हूं. अभी देखा मैंने आपने कि I was transmitting as a wider beam, फिर पेपर के कोन से मैंने लोकलाइज कर दिया. So similar process is also used in the transducer. We are transmitting it as a beam, but ऐसा नहीं होता है कि 100% ट्रांसमिशन बंद कर दें हम. साइड में भी ट्रांसमिशन थोड़ी बहुत होती है. So the sound waves which is transmitted, major part of energy is transmitted like this, but there are also energy transmitted sideways. So these are called side lobes, and this one is called main lobe. ये हमने ट्रांसमिशन को पेपर में दिखाया कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है. तो इस रेडिएशन को हमने दिखाया जिसमें हम इसको मेन लोब बोलते हैं और इसको साइड लोब बोलते हैं. So very often what happens that there is this main lobe and there is this side lobe. When the ship is sailing, sometimes when she is going on a sloping surface, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाले एंगल से रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छी आती है, ये वाला उतना अच्छा नहीं आ पा रहा. मेन लोब से रिफ्लेक्शन नहीं आती अच्छी, साइड वाले से ज्यादा अच्छा से रिफ्लेक्शन आ रहा है, फेवरेबल एंगल मिल जाता है. तो अगर रिफ्लेक्शन यहां से आ रही है तो क्या ये एंगल चेंज ना हो गया? जो पहले अल्फा यहां थी अब अल्फा दूसरा बदल गया या नहीं? Yes, sir. So this will cause an error, but जो इस तरफ को ट्रांसमिशन हो रही थी उसमें this one and this one get coupled together और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को उसी तरीके से नलिफाई करते हैं जैसे जेनस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रिम के केस में हुआ था. तो इसके चलते एरर तो होती है, बट इट इज वेरी वेरी मिनिमल अगर ये जेनस कॉन्फ़िगरेशन में है तो. ठीक है. So we have 10 minutes. We'll take a look at the slide. Through the slides we'll go. Just 1 second. Let me find it out.
ओके, ट्रिम का केस हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। So we have finished this trim. Effects of ship's motion, heaving, rolling, pitching, yawing, and इसको हम एक इसमें देखते हैं टेबल की फॉर्म में। So here what we have. Next, errors. So the errors that we were talking about, it could be because of equipment, it could be because of equipment, because of installation, it can be because of data processing, that means computer में कुछ गड़बड़ है, propagation conditions, C conditions, etc. So जो हमने FR, FT इन सब के बारे में देखा, that is data processing error. इंस्टॉलेशन में ट्रांसड्यूसर ओरिएंटेशन का एरर, प्रोपगेशन कंडीशन में हमने देखा सी की एरर, एटसेट्रा एटसेट्रा। वन मोर थिंग इज सी कंडीशंस हियर व्हिच इज एडेड अप, जिसमें हमने वैसे तो वेरियस मोशंस में देखा है कि हाउ द स्पीड इज अफेक्टेड, दैट कॉजेज एरर व्हिच इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट एट सी when the ship is sailing, when the transmission is taking place, it is at one angle. When the transmission is getting received, by the time it is received by the transducer, the angle has changed. So reception time में और transmission time में there is a difference of angle. This also causes problem in the displayed speed, error in the displayed speed. Rolling pitching के बारे में तो देख लिया हमने, but additionally this is talking about when the transmission was happening at one angle, the reception is happening at another angle. Change हो गया, जहाज हिलता रहता है ना, in that case also there can be error. If this angle was something like 2 degrees, that will lead to an error of 0.1%. 0.1% error in the indicated speed by a change in the angle between transmission and reception by about 2 degrees. So read through this, errors of Doppler law. If any question, please ask me. Next, 59.
ठीक है, नेक्स्ट 60। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो रिस्पॉन्स। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हाँ सिर्फ आवाज आ रही है। Yes, sir. जवाब नहीं आया तो मैं डाउट में आ जाता हूँ। ओके, सो एनी क्वेश्चन हियर? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट। ऑल क्लियर। एक एडेड इंफॉर्मेशन है कि टेम्परेचर की वेरिएशन को मेजर करने के लिए एक टेम्परेचर सेंसर कॉल्ड थर्मिस्टर लगा होता है नीचे ट्रांसड्यूसर के पास। वो पानी का टेम्परेचर चेक करता रहता है और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होती है पानी की, वैसे थोड़ा करेक्शन पहुंचता रहता है प्रोसेसर में। सो स्पीड ऑफ द साउंड वेव का करेक्शन थोड़ा बहुत होता है। इट इज नॉट एलिमिनेटेड बट इट इज मिनिमाइज्ड। The error due to sound waves or propagation of the wave through water is compensated little bit with this feedback from the thermistor. So that is an additional measure to overcome a limitation. Error due to ship's motion, जो आपको बताया था अभी, 2 डिग्री का difference in transmission and reception time will lead to about 1% of error in the indicated speed. Next, next, error due to rolling and pitching, that we have also seen. This is a dynamic error which keeps on changing. Previous one was also dynamic error. Dynamic मतलब जो बार बार चेंज होता रहता है, not fixed. So with this we are done with the errors. Last एक है measurement of frequency received. So we are having, अच्छे साइड लो भी रह गया, सॉरी, एक लाइन देख ही लो जल्दी से. साइड लोब से कभी कभार स्ट्रॉन्ग सिग्नल आती है, अच्छी सिग्नल आ जाती है, तो ट्रांसड्यूसर उसी को प्रोसेस करने लगता है. Genus configuration helps in eliminating this. Also, we make it as narrow as possible. The beam of the transmission is narrowed down.
not wide angle transmission, but narrow beam transmission. So that's it. Last topic is calibration of Doppler log. That we are going to talk about in the next class, which is the last topic of this. 10 minutes we'll finish that one. And then we'll start the new topic of GPS. Yes? Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Any questions? Thank you, sir. Chalo, okay. Then bye-bye. Thank you, sir. Take Thank you, care. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye-bye. Bye-bye.